बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडल पेपर नंबर 42 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मैंशनड इन कुरान 4 times। नेक्स्ट है खातिबुल अंबिया। खातिबुल अंबिया इज़ अ टाइटल ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। खातिबुल अंबिया इज़ अ टाइटल ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है अ वर्स ऑफ द होली कुरान इंडिकेट्स द नेम ऑफ हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोबारा सुने, A verse of the Holy Quran indicates the name of Hazrat Zaid रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी कि हज़रत ज़ैद जो ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कुरान पाक में आया, ये सहाबी रसूल हैं। नेक्स्ट है मस्जिद ज़ुक़िबलतैन इज सिचुएटेड इन मदीना। विच सूरा ऑफ कुरान has Bismillah twice, that is Surah Naml. Sadqa Eid ul-Fitr has been proclaimed in the year of 6 Hijri। सदका ईद उल फितर हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड, यानी कि ज़रूरी किया गया, फ़र्ज़ किया गया, इन द ईयर ऑफ यानी कि 6 हिजरी। नेक्स्ट है इमाम दारुल हिजरत वाज टाइटल ऑफ इमाम मालिक है, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी मदीना से बाहर कदम तक नहीं रखा। ठीक है, ये मदीना से बाहर नहीं गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अमीनुल उम्मत इज़ अ टाइटल ऑफ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीनुल उम्मत इनको टाइटल दिया गया। अमीनुल उम्मत इनको टाइटल दिया गया हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज़ मोहम्मद बिन इस्माइल। मक्का वाज कंकर्ड इन 8 हिजरी। ठीक है, 8 हिजरी को मक्का कंकर्ड हुआ, या 628 ईस्वी को। नेक्स्ट है जामे कुरान इज़ अ टेकन फॉर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। जामे कुरान इज़ अ टेकन फॉर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह। नेक्स्ट है पियोस खलीफा। पियोस खिलाफत लास्टेड फॉर, यानी कि जो दूसरे खुलफाए राशिदीन है वो कितने सालों तक रही? 30 साल। एबीसीनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। एबीसीनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। नेक्स्ट है नेटो। NATO नॉन-लाइन मूवमेंट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, NATO के 28 या कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी बाकू इज़ अ सी पोर्ट ऑन कैस्पियन सी। ठीक है, बाकू इज़ अ सी पोर्ट ऑन कैस्पियन सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। उसका नाम है जी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये कश्मीर में 720 किलोमीटर तक इंडिया के साथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जी चाइना। विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, डैट इज़ चाइना। नेक्स्ट व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2। K2 की कितनी हाइट है जी? इसकी हाइट है 8611 मीटर। K2 की कितनी हाइट है जी? 8611 मीटर। नेक्स्ट व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ K2, डैट इज़ गुडविन ऑस्टन। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गेट्स इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है जी 9 ईयर्स। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गेट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? आफ्टर 9 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 1956 में लगा है। नेक्स्ट है व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव प्लेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज़ अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा सुने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1939 को पास हुई। व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये है 12 मार्च 1949, मैं आपको बता चुका हूँ। When did मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला। उन्होंने बोगरा फार्मूला कब मौलाना मोहम्मद अली बोगरा ने प्रेजेंट किया? अक्टूबर 1953 के अंदर। ठीक है, अक्टूबर 1953 के अंदर। नेक्स्ट है जी हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे जी? मोहम्मद अली बोगरा वाज ए प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद अली बोगरा वाज ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। उसका दूसरा नाम क्या था जी? उसका दूसरा नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा के दूसरा फार्मूले का दूसरा नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। नेक्स्ट व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड? 23 मार्च 1956 को। ठीक है, 23 मार्च 1956 को एनफोर्स किया गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये है जी नेशनल असेंबली, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को कौन बनाएगा? तो नेशनल असेंबली MNA जो लोग होते हैं, नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है
इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यह है 1973 के अंदर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, तो यह है 1610 किलोमीटर। पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है वो कितने किलोमीटर है, 1610 किलोमीटर, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर के अंदर है वो 720 है, और जो ओवरऑल बाकी है वो 1610 किलोमीटर उसके साथ है मिला के लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान इज सिचुएटेड, तो ये है जी साउथ एशिया, ठीक है, यानी कि वेस्ट एशिया लेकिन फिर आगे साउथ एशिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया पाकिस्तान, ये 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। मिस्टर भुट्टो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन शिमला एग्रीमेंट, हु पार्टिसिपेटेड फ्राम इंडिया, मिसिज इंदिरा गांधी, ठीक है। 1972 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। व्हेन द शिमला अकॉर्ड वाज साइन, ठीक है, जुलाई 1972, ठीक है, ये याद रखना है, जुलाई 1972। व्हेन वाज ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्राम वेस्ट पाकिस्तान, ये 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ। दोबारा सुने, व्हेन वाज ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्राम वेस्ट पाकिस्तान, डेट इज़ इन 16 दिसंबर 1971। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो ये है जी ब्राज़ील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, डेट इज़ ब्राज़ील। नेक्स्ट वन, बाकू इज़ द सी पोर्ट ऑफ कैस्पियन सी, बाकू इज़ द सी पोर्ट ऑफ कैस्पियन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज़, when did Pakistan become the member of United Nations, that become the member of, we become member of United Nations on 30 September 1947. Next one, which country opposed Pakistan's membership in United Nations, that is Afghanistan, that is a landlocked country. The scientist who first discovered that the earth revolves around the sun, that is a Copernicus, okay. Copernicus says that he discovered that the earth revolves around the sun, okay. Alexander Fleming discovered penicillin, A. Fleming or Alexander Fleming discovered penicillin. Next one, which instrument is used to measure pressure, that is a manometer. Manometer is used to measure pressure, okay. Manometer is an instrument that is used to measure pressure. What does angstrom measure? What does angstrom measure? That is speed of light. We can measure the speed of light by angstrom measure, okay. Angstrom measure. Next one, old name of Iraq, that is Mesopotamia. The old name of Iraq, that is a Mesopotamia, and Babylon is also a city of Iraq, okay. It's all skin question answers. Old name of Iraq is Mesopotamia. Next one, blood is red due to hemoglobin. Which is the smallest country in the world? Which is the smallest country of the world in area? That is a San Marino, SANMARNIO. Which is the smallest country in the world is in area, that is San Marino, but also Vatican City. Next one, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam appoint governor of Yemen for collection zakat. His name was Hazrat Muaz bin Jabal radiyallahu ta'ala. Next one, which international environment pressure group was founded in 1971? That is a Greenpeace. Listen again, which international environmental pressure group was found in 1971? That is a Greenpeace. Next one, what is the capital of Morocco? The capital of Morocco is Rabat, R-A-B-A-T. The capital of Morocco is Rabat. Next one, how many balls are on the table at the starts of a game of pool? That is a 16, okay, 16. How many balls are on table at the start of the game of pool? That is 16. In which country is the volcano Mount Asal situated? That is in Japan. Listen again, in which country is the volcano Mount Aso situated? That is in Japan. Next one is, what name is given to inflammation of one of the more joints causing pain, swelling and restriction of movement? That is arthritis. Arthritis कहते हैं जी उसका यानी कि फालिज वगैरह हो जाना या किसी चीज़ का हाल ना पाना, जोड़ों की बीमारी वगैरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, which mineral is the main source of mercury? That is a cinnabar, CINNABAR, cinnabar. Which mineral is the main source of mercury? That is a cinnabar, and the mercury is the only a metal that is a liquid at room temperature, okay. Mineral that is the lightest metal in the earth, mercury and cinnabar, okay. It is a main source of cinnabar. Next one, diamond is an allotropic form of carbon. Diamond is an allotropic form of carbon. Next one, the element common to all acids, that is hydrogen. Hydrogen is also present in all the acids, HCl, H2SO4. Next one, gobar gas contains mainly methane. Gobar gas contains mainly methane, CH4, its chemical formula. The most
the most malleable metal is a copper. The most malleable metal is a copper. Next one, which element is used in beauty parlor for hair setting? That is a sulfur. Listen again. Which element is used in beauty parlor for hair setting? That is a sulfur. Next one, from which mineral is radium obtained? That is a uranium. From which mineral is radium obtained? That is from uranium. And the district where Pakistan get the uranium most, that is a Dera Ghazi Khan. Next one, what is the laughing gas? Laughing gas is a nitrous oxide, N2O. Okay, N2O. Okay, nitrous oxide. Next one is which is a bad conductor? A wood and a rubber is a bad conductor. Which element used for producing nuclear fuel? That is a uranium. Listen again. Which element used for producing nuclear fuel? That is a uranium. Next one, official language of Japan is Shintoism. Okay, official religion of Japan is Shintoism. Maximum wool producing country is Australia. And next one, headquarter of SAARC is situated at Kathmandu. Headquarter of Gandhara civilization is in Taxila. Headquarter of Gandhara civilization is Taxila. Mariana Trench, the deepest point of the Pacific Ocean, is in Philippines. And next one, okay, I hope you understand. समझ आ गई होगी. Next one is कि Don is a river of Russia. Don is the name of river and is situated in Russia. Don is the name of river of Russia. Next one, what is the length of Khyber Pass? It is 56 kilometer. Okay, almost 53 or 56. Okay, next one is longest glacier of the world is Lambert, situated in Antarctica. What is its total length? Its total length is 320 miles. पाकिस्तान में जो सबसे लंबी ग्लेशियर है वो है जी साइचन ग्लेशियर. उसकी 72 किलोमीटर लेंथ है. और दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी ग्लेशियर है वो है जी लैम्बर्ट ग्लेशियर. वो सिचुएटेड है एंटार्कटिका में और उसकी लेंथ है जी 320 माइल्स. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ मोस्ट पोल्यूटेड लेक इन द वर्ल्ड? तो ये है लेक इरा, लेक EIRE. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ मोस्ट पोल्यूटेड लेक इन द वर्ल्ड? दैट इज़ अ लेक क्लियर. नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द पाकिस्तान? दैट इज़ अ USA. लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ USA. वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच? दैट इज़ इन न्यूयॉर्क. नेक्स्ट है जी, ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड वाज कौन था जी? जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन इज़ द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड. ठीक है, ये बुक का नाम है. नेक्स्ट है, असगरी एंड अकबरी और करेक्टर्स ऑफ विच उर्दू नावल? डैट इज़ अ मिरातुल अरूस है. ओके, मिरातुल अरूस नावल का नाम है और इसमें असगरी और अकबरी जो हैं ये मशहूर करेक्टर हैं. ओके, मिरातुल अरूस. ठीक है, मिरातुल अरूस. नेक्स्ट वन, शिकवा और जवाब शिकवा और इन विच बुक ऑफ अल्लामा इकबाल? दैट इज़ इन बांगे दरा. ओके, बांगे दरा, दैट इज़ द फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन ऑफ अल्लामा इकबाल. नेक्स्ट वन इज़ अल्ताफ़ हुसैन was the student of Ghalib. Altaf Hussain was the student of Ghalib. Altaf Hussain, Mirza Ghalib is also a famous poetist. Altaf Hussain was the student of Ghalib. Next one, Kabul tragedy. Kabul tragedy was occurred in Karbala tragedy was occurred in 61 Hijri according to 680 Iswi. Okay, 680 Iswi. Next one, drama is the word of which language? Drama is the word of which language? That is the language of Greek language. Okay, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ड्रामा. नेक्स्ट वन, who is called कातिबुल अंबिया? That is हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम. नेक्स्ट वन, contemporary queen of हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम was Malka Saba. His real name was Balqis. Okay, contemporary queen of हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम is Malka Saba और उनका असल नाम क्या था जी? बल्कीस है. ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑर्निथोलॉजी. Ornithology is the study of birds. The only vitamin which cannot be stored in a human body, और ये है विटामिन सी जो गर्म करने पर ख़राब भी हो जाता है. नेक्स्ट वन है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the structure of animal and plant. तो ये है जी एनाटमी. ओके, एनाटमी
ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है स्ट्रक्चर और एनिमल ऑफ प्लांट के साथ। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सेसिमोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सेसिमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट। ये है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट। D8 सारक और ECO में OIC जो है ये 1969 में बनी थी और ये सबसे पुरानी है इनमें से। नेक्स्ट वन, वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेड क्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट अब सिनोनिम और एंथोनिम्स है। पहला सिनोनिम है जी एसिडुअस का सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है जी हार्ड वर्किंग, ओके। ASSIDUOUS एसिडुअस का सिनोनिम हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है FUSS फस का सिनोनिम है अननेसेसरी एक्साइटमेंट, ओके, अननेसेसरी एक्साइटमेंट। FUSS फस का सिनोनिम अननेसेसरी एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है प्लेसिड PLACID इसका जी कॉम CALM कॉम सिनोनिम है यानी कि नरम पड़ जाना, प्लेसिड नरम पड़ जाना। नेक्स्ट है NAIVE इसका है जी सिंपल, ओके, सिंपल। नेक्स्ट है इमैक्यूलेट का सिनोनिम है जी फ्लॉलेस, ओके, FLAW फ्लॉलेस। नेक्स्ट कोलियूनियन COLLUS यानी कोलियूनियन का सिनोनिम है जी डिजास्टर। नेक्स्ट है एंथोनिम यानी कि मुखालफ अल्फाज। प्रॉस्पेरिटी का हार्डशिप। सेंट का है जी अबंडेंट, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट